KKR। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to Night Club. We need an ID proof to let you enter. Are you a Kolkata Knight Riders fan? Oh, it's free entry for you. Are you a cricket fan? It's free entry for you as well because we'll convert you into a KKR fan. ये शो आपका कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस का है जहां आपको रूबरू कराएंगे आप ही के फेवरेट नाइट से क्या चलता है पर्दे के पीछे, क्या उम्मीद करें मैदान पे, सबकी बातचीत ये यहाँ पर मेरे साथ एक एक्स नाइट या कहीं इस शो पे गेस्ट डीजे आकाश डीजे। जी हाँ, आज फिर बजाएंगे थोड़े से बढ़िया गाने जहां पर हमारे जैसे जो कोलकाता नाइट राइडर्स के फैन उनको जरा मजा आए। मजा आएगा, लेकिन हम गानों के साथ साथ क्या बजाते हैं, हम बात करते हैं। We spin out some numbers, we spin out some analysis, we look at what the team has been up to. कोलकाता नाइट राइडर्स बेहतरीन जीत दर्ज करके हैदराबाद से टीम पहुंच गई है मोहाली। भाई सफर के दौरान भी तो बहुत दिलचस्प लम्हे होते हैं, तो जब आप नाइट क्लब में आए हैं अपने नाइट से मिलने तो दिखाते हैं आपको बिहाइंड द सीन्स। हाउ वाज द जर्नी टू मोहाली? लेट्स फाइंड आउट। Dhoni, your favourite cricketer? Yeah. Dhoni and Virat Kohli. And Virat Kohli? Who's Virat Kohli? He's an RCB. RCB, never heard of him. Arrival is 3 o'clock and thank you for joining us and all the best to KKRs for the rest of tournament. Session is really mandatory, so it helps. It was hot last game, it was 44 degrees here as well. It's going to be really hot, so I think it's really important to come to the pool and cool your muscles a little bit, get it all going, and feel the water. That's nice. भाई चंडीगढ़ मोहाली की गर्मी से बचना है, अपने आप को कूल रखना है, so you need a few pool sessions. Quite interesting, right आकाश? These sessions and all these things that you do, आप जब ब्रेक में करते हैं, अगर आप जीत के आ रहे होते हो तो थोड़ा शायद माइंड से थोड़ा माहौल अलग ही होता है। ये मजा अलग आता है क्योंकि अब जिस साल मैं था इनके साथ, जो पहले 2 साल थे, हम जीत के जाते नहीं थे ज़्यादातर, जब पहुंचते थे होटल में, और फिर कई बार तो होटल में मैच के बाद ही कहते चलिए टाइम है, चलिए पूल में सारे के सारे और उतर जाइए आप, क्योंकि यू हैव टू रिलैक्स, क्योंकि अगला आपको ट्रैवल करना है। लेकिन माहौल थोड़ा सा ग्रिम रहता था, लेकिन अब ये पक्का है, ये बात तय है कि चाहे ये हार के पहुंचे या जीत के पहुंचे, इतनी अब सफलताएं देख चुके हैं पिछले कुछ समय में कि ये कोलकाता टीम अब जब भी पूल में उतरती होगी ना तो मस्ती करती होगी। तो भाई पहुंच गए हैं कोलकाता के माछेर झोल से मक्की दी रोटी और सरसों के साग के शहर में, लेकिन of course they're there for some serious business. What is that serious business? They're up against Kings 11 Punjab, जिनको भी जीत की राह मिल गई है। पिछला मुकाबला अपना जीते हैं, कुछ बड़े खिलाड़ी फॉर्म में आए। What do you expect from this game, KKR versus Kings 11 Punjab? Let's find out. किंग्स 11 पंजाब ने तो अपनी पहली जीत दर्ज कर दी, लेकिन अब उनका सामना एक ऐसी टीम से होने जा रहा है जो आईपीएल 2016 की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3 में से 2 मैच बड़ी ही आसानी से जीते हैं। केकेआर के लिए गौतम गंभीर और रॉबिन उथप्पा ने मैच दर मैच एक जबरदस्त स्टार्ट दी है और शायद इसी वजह से उनका मिडिल ऑर्डर अनटेस्टेड है और ये एक चुनौती बन सकती है पंजाब के खिलाफ। गंभीर, उथप्पा और पांडे ने मिलाकर 86% रन्स बनाए हैं और बाकी बैट्समैन ने लगभग 13%। टूर्नामेंट में आगे बढ़ने से पहले वो चाहेंगे कि हर बैट्समैन को अच्छी प्रैक्टिस मिल जाए और पंजाब की भी यही कोशिश होगी कि गौतप्पा की जोड़ी को तोड़ा जाए और मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर डाले। जीतने के लिए यही एक गेम प्लान हो सकता है पंजाब का।
लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कैप्टन गौतम गंभीर, कप्तान गौतम गंभीर, वीर कप्तान जो ज़ारा करते हुए बहुत आगे पहुंच गए हैं आकाश. 192 is what he scored, and let's have a look at Gautam Gambhir's transformation of sorts. Throughout this IPL, he's led this team from the front, which is why there's been respect and adulation coming from all corners. You look at most 50s in T20s. Chris Gayle, Brad Hodge, David Warner, Virat Kohli, and then you've got Gautam Gambhir. In 199 games, he scored more than 5,000 runs too, and 41 scores, which have been in excess of 50. And when you think about Gautam Gambhir, you don't really see him in the same light. Of course, Gautam Gambhir and Robin Uthappa have stitched together quite a few partnerships, 27 innings, over 1,000 runs, 950 plus partnerships, but Gautam Gambhir, yeah, क्या form में है? The good thing is when your captain is in form, everything starts falling in place quite nicely. और गौतम कप्तान भी कुछ इस तरीके का है कि he wants to lead by example. और उसका एक छोटी सी एक कहानी थी कि बताया करता था कि वी वर प्लेइंग द रणजी ट्रॉफी फाइनल्स. तो अब रणजी ट्रॉफी फाइनल्स में सो द ओनली थिंग वी एक्चुअली सेड एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज कि यू डोंट विन सिल्वर, यू लूज गोल्ड. तो भैया अगर वहाँ तक पहुँच गए हो तो फिर ये दूसरे नंबर पे आने का कोई काम नहीं है. फिर वहाँ तक पहुँचो तो यार जीत के जाओ. हाथ फ्रैक्चर था उसका. सेकेंड इनिंग्स यहीं पर मुंबई में मुकाबला था यूपी के साथ, और फर्स्ट इनिंग्स में बराबर हमने एक्चुअली वी कंसीडर्ड लीड ऑफ 50 odd runs. He failed in the first innings. Second innings his hand he had a fracture in his top hand में fracture माने बैटिंग करना बहुत मुश्किल. But he went out, scored a century, remained unbeaten, won the game for Delhi. So phenomenal. That's the kind of character he is. There's another very inspirational saying, right? If you give me 6 hours to chop down a tree, I'll spend the first 4 sharpening the axe. तो हम जो 2 घंटे देख रहे हैं किस तरह एक बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा देते हैं गौतम गंभीर, लेकिन इसके पीछे शायद वजह भी है जो प्रैक्टिस करके आए हैं. वैगन व्हील की तरफ देखते हैं. पिछला जो मुकाबला था सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, बेहतरीन पारी खेली 90 रनों की. Almost 69% of the runs आकाश came on the leg side. तो जिस मेहनत की हम बात कर रहे हैं वो है इनका जो बदला हुआ स्टांस है. It's not surprising one bit. Obviously he's likely to score runs in this direction a lot more. लेकिन क्या एक चीज बदली जो है, देखिए जब आप थोड़ा सा स्टांस खोल लेते हैं, बैट थोड़ा आपका बाहर से आता है, तो फिर इस तरफ शॉट जाएं, ये बात सही है, स्पष्ट है, होगा. लेकिन ये पुल बड़े अच्छे मार रहे हैं. तो ये जो पुल मारे, चाहे वो मुस्तफिज रहमान को मारा इन्होंने, चाहे वहाँ पर वीरेंद्र सहवाग को मारा, चाहे भुवनेश्वर कुमार को मारा, आप इनको पुल पे पहले आप इनको फंसा सकते थे कि छोटे से कद का है ना, तो इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता था. अब पुल मार रहा है मिड विकेट की तरफ, स्क्वायर लेग के राइट हैंड साइड पे पुल मारने का मतलब कि प्रैक्टिस बहुत की. और हमने विजुअल्स भी देखे थे जो इन्होंने वहाँ पर जस्टिन लैंगर के साथ गए थे पिछले समर में. यहाँ खड़े होकर मूव करना इन्होंने शुरू किया है और बहुत अच्छे पुल मार रहे हैं. और मुस्तफिज रहमान जिसको हम सबसे अच्छा T20 बॉलर मार रहे हैं इस समय, उनको थोड़ा सा उनका कद छोटा किया था इस मुकाबले में. He's going to make sure that he always pulls the team out of slump. हमने बात करी थी जस्टिन लैंगर की, पिछले समर में जाके ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ थोड़ा काम किया. But now he's also got Jacques Kallis who is with the team, and you've got some others as well who would want to follow the footsteps of Gautam Gambhir. Let's find out the resurgence of the southpaw. अब तक के KKR की सक्सेस का श्रेय अगर किसी एक खिलाड़ी को जाता है तो वो है गौतम गंभीर. The captain has led from the front, और सनराइजर्स के खिलाफ भी वो अंत तक डटे रहे. Great lesson to be learned going forward. See what can happen if you just hang in there and spend a bit of time with the wicket. It becomes easier and then they couldn't bowl to him. So great lesson and well done, Skip. उन्होंने ना सिर्फ गेम को फिनिश किया बल्कि किसी भी ऑपोजिशन के गेंदबाज को हावी नहीं होने दिया. उनके इस प्रदर्शन का राज उनका इंप्रूव्ड लेग साइड गेम, जिसके लिए उन्होंने खास ट्रेनिंग ली थी. गंभीर ने अपने स्टांस पर काम किया और उसी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाजों को लेग साइड पर बहुत पीटा. इस न्यू एंड इंप्रूव्ड गौतम गंभीर ने KKR को और स्ट्रॉन्ग बना दिया है. Well done indeed, skipper. जैसा कि उन्होंने कहा कि अंत तक खेलना चाहते थे, भाई कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस उम्मीद करेंगे कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंत तक खेले, 29 मई तक खेले और पहली टीम बन जाए कोलकाता नाइट राइडर्स तीसरी बार इस IPL की प्रतियोगिता को अपने नाम करने के लिए. भाई इन्होंने तो थोड़ा स्टांस बदला, लेकिन बाकी भी खिलाड़ी हैं इनके साथ साथ जिन्होंने स्टांस के साथ साथ अपना अंदाज बदला, और शायद कहीं कल को प्रोफेशन ना बदलने, क्योंकि अगर आप पोजेज इनके देखेंगे तो हॉलीवुड बॉलीवुड के सामने कंपटीशन तो तगड़ा है. So, we were talking earlier about your favorite Bollywood movie. Which one was that? The Rabni Bahati Georgie, something like that. Did you? It's a Shah Rukh Khan movie, so did you enjoy watching it? Yeah, or anything to do with Shah Rukh Khan's. All right. So what we're going to do right now is we've seen the poster. We're going to recreate it. So in our own little way.
धर्मेश, हमें कोई ऐसी मूवी के बारे में बताइए जो आपको देख के बड़ा ही ज़्यादा मज़ा आया हो। बंटी एंड बबली। So, Shakib, tell us what your favorite movie is. Obviously Gladiator, Braveheart, Troy. Okay, so if we had to pick one to do a movie poster, to reenact a movie poster, which one would you pick? Troy. So Robin, what is your favorite movie? Well, I have a lot of favorite movies, but if I have to name a romantic comedy, I'd have to say Notting Hill. So Andre, which is your favorite romantic movie? I'm gonna go with Titanic. A team that poses together wins together. भाई थोड़ा फिल्मी तड़का तो होगा कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम है, but good to see such happy faces and थोड़ी मस्ती मजाक तो चलता रहता है, तभी तो आप देख रहे हैं नाइट क्लब। लेकिन एक और बात करते हैं, पिछले मैच में कुछ समय के लिए गौतम गंभीर फील्ड से बाहर गए आकाश, and we saw the vice captain of the team, young Surya Kumar Yadav, who's of course captain Mumbai. For some time he was asked to lead. There are some other big names in the side, but is that what KKR are again, a team which leads by example or sets an example? Youngsters ko groom karna. Well, in this case, definitely they're leading by example because it's one thing grooming the youngsters. We've seen quite a few teams doing that. Maybe it was Rajasthan, now it's Delhi and Kings 11 or whatever. But then grooming a captain and grooming a young uncapped Indian captain, boss, ये पहली बार देखा है, तो इसका मतलब ऑलरेडी जो ब्लूप्रिंट है वो बिल्कुल स्पष्ट है, इनके सामने साफ इनको नजर आ रहा है कि अगर गौतम गंभीर ने अगर बेटन किसी को पकड़ाना है तो वो किसको पकड़ाएंगे, वो होगा स्काई। तो फिर अगर इतना विश्वास किसी खिलाड़ी में करते हैं, बहुत नीचे बैटिंग करने को मिलती है इनको आजकल, ज्यादा ऊपर इनको बैटिंग करने को नहीं मिलती, लेकिन अगर इतना विश्वास आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे, तो फिर खिलाड़ी कहता है यार मैं ना बॉल में से निकल जाऊंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता, इस टीम के लिए मैं सारी जिंदगी खेल सकता हूं। तो फिर अगर ऐसा काम आप कर लेंगे तो उनको आप हमेशा सारी जिंदगी के लिए ना आप खरीद लेते हैं खिलाड़ी को, ये वो टीम कर रही है। तो अगर सूर्य कुमार यादव देख रहे हैं, बाकी सब देख रहे थे, बता देते किस तरह से कप्तान गौतम गंभीर खुद लगभग ऐसा विश्वास रखते हैं that for you sky is the limit. I think media portrays a lot of other franchise, someone like it used to be Rajasthan Royals and other franchise, that they groom a lot of young players and all that kind of stuff as well. It is not only about grooming young players, it's about grooming individuals as well. And KKR has groomed a lot of individuals. Maybe other franchise must have groomed a lot of players on the field, but we want to groom players off the field as well. So I thought that giving extra responsibility to someone like Surya Kumar Yadav will help him groom not only as a cricketer on the field, but help him groom as an individual off the field as well. Because when you start thinking and when you start getting mature off the field, you start thinking better on the field as well. So that exactly was the reason, because I see that he can achieve a lot in future as well, and it's about giving him that responsibility and making him feel important as well, and hopefully he can continue the legacy once I finish. And I see him carrying the legacy or carrying the tradition or carrying the culture what we've built in last 5 or 6 years once I finish, because I feel that he has that passion, he has that hunger to achieve a lot. Well, what more can a youngster ask for? You've got his skipper, who's of course an ex-India international. He's achieved so much. वो आप में विश्वास जता रहे हैं. लेकिन पूरी अगर बात करें इस franchise को जब देखते हैं आकाश, even if you talk about the owners, Mr. Venki Mysore, they've been at the top of the ladder. They've enjoyed success. लेकिन इनका अपना अंदाज है. You see that sense of composure, which has actually worked well, not just maybe for Surya Kumar Yadav, Manish Pandey, Robin Uthappa, Yusuf Pathan. You know, at times, a lot of times we actually put a lot of emphasis on how you are you're judged by your ability to gather resources, and that's how you go to the auction table and you get a very good side. But the other aspect that generally goes unnoticed is the fact that it takes even bigger effort to keep the core together, to just retain the same talent, keep them happy so that they actually want to play for your franchise, and once their contract is over, they're not looking for a transfer. So that's what this team has done. That's what Chennai used to do, and all successful teams around the world, whether it's cricket, football, or any other team that you see, you will find that common thread everywhere running there, that all the players who play for a franchise, they play with pride and they want to play for that franchise. लेकिन एक चीज होती है ना, जब आप थोड़े strict होते हैं, because you mean business, उसी के साथ-साथ थोड़ा सा रिलैक्स रूल्स को करना चाहिए. भाई काफी बार होता है प्री सीजन ट्रेनिंग के लिए कुछ खिलाड़ी जाते हैं साउथ अफ्रीका, फिटनेस पर काफी ध्यान देते हैं, लेकिन अगर आप पंजाब आ गए हो तो आपको आलू पराठा खाना अलाउड है. कभी-कभी आलू पराठा बनाना भी अलाउड है.
Okay, so this is the one you're talking about, right? Yeah. And you have to add butter on top. Yeah. Once it's ready, some pickle, and you're ready to go. You know, right? Good luck, bud. So far, so good, mate. So just wait to see what the finished product is, eh? Yeah, basic shape's okay, not too bad. Round. Mine comes with red pepper, black pepper, toilet paper, and a pot of Vaseline. I'd love to be able to make pani puri, the whole thing from scratch. From scratch? Yes, because pani puri is beautiful. Mine might not look so nice, but it's definitely going to taste the best, I can guarantee you that. I've added some banana and some ice cream and all those sort of things in here, so... Yours is burning. Brownies for my wife. She loves them. They make a good brownie. How is the taste? Great. Great. Awesome and great? Great. Great. Okay. And who want to try next? I'm scared to try your one. that? Look at it. Is it chili? Chili? I'm too... No ways, look at that. Awesome parantha. For her. Awesome parantha. It is very yummy. Let's have a terrific round of applause for our chef, Mr. Robin. So who is the winner? You, Jala. Oh, it was good. It was good fun. Obviously, learning to cook another dish is quite good. But most of the hard thing was done for us. The dough was already made, so that was the hardest part. It's nice to show the local boys that, you know, we come into their backyard and we cook and we win. Boom. भूख सी लग गई थोड़ी। आलू पराठा है भाई, वैसे पंजाब नहीं हरियाणा भी है, लेकिन टच थोड़ा चंडीगढ़ में पंजाब का ज़्यादा देखने को मिल जाता है। लेकिन ये ऐसी एक चीज़ है, इतनी फेवरेट है आकाश चोपड़ा जी की भी हैं तो दिल्ली वाले हम सब, लेकिन उन्होंने बोला मैं ये देखना भी नहीं चाहता क्योंकि उनकी आजकल फेवरेट डाइट है क्या, एनालिसिस डेमो जोन। तो वो पहुंच गए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट डेमो जोन, जहां पर उनके साथ है Dean Jones, and they're talking about some of the big threats that Kings 11 Punjab will offer. Akash, over to you. Well, you're right, Jatin. After having numbers for breakfast, I'm having analysis for lunch. It's just that, you know it, I have company. I've got Professor Dino with me. Dino, we're talking about these three big threats ahead of this KKR game. Let's start with the opener, Manan Vora, 3 M's. So that Manan guy, young kid, is playing well. He's got good numbers against this side. Averages about 36. He's got a decent strike rate. But yeah, early days, how do they plan? Well, the bottom line is, I think the fact with Narayan particularly and Chawla is the fact that if they can just keep bowling straight to him, because I think he'll do something silly. What's his go-to shots? The interesting thing, what is his go-to shots? You like to go down the ground or you like to try and slog it on the leg side? Now, his weakness will be for Chawla, playing against the spin, but I expect him to do something silly, whereas the other boys, maybe not so. But the key to it, of course, is with Narayan, he bowls straight, he bowls wonderful lengths, and he's very, very hard to get away. And interestingly, he's not a huge turner. You know, that's the thing, and we have seen Manan Vora going after spin after getting set and then throwing his wicket away. So that could be a key thing, get spin early on. But you're right, when we talk about Murli Vijay, Sunil Narayan's name comes to your mind straight away. But he hasn't bowled in the power play overs as such. So even though his numbers otherwise this season has started well for him, and against Sunil Narayan, well, who hasn't struggled? 6 innings, 16 runs, 3 times dismissed.
but will he bowl in the power play overs, Dino? That's the big question. Well, the numbers for me tell me he must. He must, yeah. He must get in there. And Badri is another player as well who bowls very, very straight and bowling straight to these lines. So the bottom line is the fact that if Narayan can get it nice and straight to him, and I would bowling to him, his go-to shot, as you know, is go downtown. He likes to actually look to hit it down over the ground, and occasionally will try and lap it. That's what he does. Right, so the key to it, if he misses, you'll knock him over. But the key to it again is he's got a mental scar. And as you know, Akash, if you've got a couple of guys who struggle facing certain bowlers, I know, I had Hadley and Curtly Ambrose and a few guys. So he struggles against him, I would bowl him straight away. They're the little things the coaches have got to tell the captains. They do keep all of this in mind, all these coaches. And let's move to the third guy, Glenn Maxwell, the big show. He doesn't want to be called that, but the fact is, in this team, he is the threat. Last game that he played against Pune, he did get some runs, but then this was Murugan Ashwin against Glenn Maxwell. The theory is that he struggles against leg spin, but if you pitch it slightly away and not within the stumps, is that correct? Yeah, look, I think that's a really good map there to actually tell us where we're at with him. Now, when he's playing well, he's got the reverse sweep that he premeditates and goes, and he goes hard. But the fact is that he's not playing that shot well. And if he's not playing that shot well, I think he's still struggling. But he doesn't like to go downtown. His first option is to go, as you know, square. Yep. He doesn't like to lap the ball. He likes to go hard all the time. So the key to it is keep it straight. If he misses, get him LBW, get him out bowled, playing across the lines. So once again, this a little bit of stiff against leg spinners. So straight away he comes in, play with his ego, get the leg spinner on and tell him, you know, we know that you're not too good against leg spin. Great bowlers like Narayan and Chawla, their defensive skills have got to be on because they know these boys will be coming at him. Right. So therefore their defensive lines and lengths, as the graphic said, get the ball straight, number one. Number two, even if you're a little bit fuller, as you know, with guys sweeping it, if the ball is full, it's hard to get underneath it. If it's length, then they can get into it. So all in all, make sure you get the ball full and get the ball straight. So that's the way, Jatin. You have to start with spin now because out of the 3 M's that we have discussed, 2 are the openers. Manan Vora, Murli Vijay. Get the spin early on. Maybe Sunil Narayan for Murli Vijay and leg spinner Piyush Chawla for Manan Vora. Thank you so much, Akash. Thank you so much, Dino. Well, किसी भी गेंदबाज की बात करें, अगर आपको Glenn Maxwell का wicket मिल जाए, so that's got to be a dream wicket for you. But what about your Knights? भाई, Kolkata City of Joy, that of course is a dream come true. They're playing for this wonderful franchise. But हमने उनसे पूछा, what is your dream destination? कहाँ जाना चाहेंगे? आइए जानते हैं उनके जवाब. Imagine we're in a spacecraft. We're 2 astronauts. I'm the driver astronaut, and you tell me what you see around you. So let's do this. Are you ready? Ready when you are. Okay. There's Mars. Oh. Wow. That's quick. We just left Earth. That's quick. We are going pretty fast. Yeah, we are. Sorry, I failed my driver's test. Oh, now you tell me. You never asked. What do you see? What do you see there? There's the moon. As you can see, it's only half a moon now. Okay. Yeah. Which moon is that? Earth's moon? There's only one moon, isn't there? I think we should. Should we explore that? Yeah. You want to go? Let's go. So we are at the Barrier Reef. We're underwater. We're snorkeling. Yeah. What do we see? If you can see, there's some beautiful reef fish there. There's a parrotfish. You can see the fantastic colors, and also, you know, the sunlight reflecting on the coral reef. You know, this is so peaceful and tranquil for me. You know, oh my goodness, there's an unbelievable sea turtle coming there towards us. And a shark! And yeah. And now we're dead. भाई इन सब की ड्रीम डेस्टिनेशन तो आपने जान लिया. अब आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है? अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स के फैन हैं तो शायद नाइट क्लब ये आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन हो. लेकिन किस तरह आएंगे आप यहाँ? आकाश चोपड़ा मेरे को छोड़ के चले गए. आई नीड कंपनी मैन. आई नीड सम मोर केकेआर फैंस. किस तरह पहुंच सकते हैं अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन पे? आइए बताते हैं. ये नाइट क्लब क्या है? द सीक्रेट टू गंभीर फॉर्म दिस ईयर. केकेआर कैंप से चुराए कुछ अनदेखे लम्हे. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मनीष बाबू. टीम की टैक्टिक्स की बातें और उन पर एक्सपर्ट्स की राय.
fans, passionate fans, KKR के fans. अब हम दे रहे हैं आपको मौका नाइट क्लब से जुड़ने का. You can ask your favorite night's questions, interact with our experts, and you can take home tons of KKR goodies. All you have to do is comment on this video with hashtag AmiKKR और retweet it with hashtag AmiKKR और आप बन सकते हैं टीवी पर नाइट क्लब का हिस्सा. What are you waiting for? Go for it! इसी के साथ वक्त हो चला है नाइट क्लब के इस एपिसोड पर अलविदा कहने का, लेकिन उसी उम्मीद के साथ कि शायद अगले एपिसोड में आप हमारे साथ बैठे होंगे मौजूद इसी शो पर as audience members, as our KKR members. उम्मीद करते हैं ये शो आपको पसंद आया. We didn't have too many beats, but hoping that we caught your heartbeat, which beats for KKR. Until the 24th, it's goodbye. To me KKR, Ami KKR. Kick it.